Assalamu alaikum dear students of class 7. This is me your teacher Mushtaq Ahmad at Bera Foundation College, Noshar Firoz, subject teacher computer. Dear students, today we are going to discuss about the conversion of number system. That conversion of number system is possible to convert data represented under the one number system into other number systems. So dear students, there are some definite rules that we will have to follow whenever we are said to convert a number system into another number system. So dear students, there are two types of there are two methods to convert a number system into another number system. These methods are known as a repeated division method and an expansion or a multiplicative method. So dear students, there are two methods that we follow during the conversions of number systems. So dear students, first of all we will have to discuss about a repeated method. The repeated method is used when we are given large numbers to convert into small numbers. So dear students, we will divide the number system by the base of the said number systems. So dear students, this one method is used when we are given large number system to convert it into small number system. For example, dear student, whenever you are given the value of decimal number system and you are said to convert it into binary number system, then you will use repeated division procedure. And dear students, when you are given binary number system or octal number system to convert into decimal number system, so dear students, binary number system or octal number system are small number system than the decimal number system. So if you are said to convert binary or octal number system into decimal number system, then you will use multiplicative or expansion method. So dear students, today हमने टू मेथड्स के बारे में पढ़ा. जो मेथड्स जब कन्वर्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक हमारे पास मेथड होता है रिपीटेड डिवीजन मेथड, जिसमें हम लार्ज नंबर्स को स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, या ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो हम रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो दिया हुआ वैल्यू होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर्स आखिर में हमारे पास बचते हैं हम उनको एज अ बाइनरी शो करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिपीटेड डिवीजन मेथड की डिस्क्रिप्शन थी. उसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड जो दूसरा मेथड है, तरीक़ेकार है कन्वर्ट करने का, वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव और एक्सपेंशन मेथड. वो तब होता है जब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है ऑक्टल या बाइनरी नंबर सिस्टम को. तो बाइनरी या ऑक्टल नंबर सिस्टम को जब हमें कहा जाता है कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं अगर हमें बाइनरी या ऑक्टल की वैल्यू दी जाती है. अगर डेसिमल को ऑक्टल में या बाइनरी में करने के लिए हमें वैल्यू दिया जाता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, रिपीटेड डिवीजन मेथड. तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है, जब आपको डेसिमल वैल्यू दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसको आप कन्वर्ट करें ऑक्टल में या बाइनरी में, तो डेसिमल ऑक्टल और बाइनरी नंबर सिस्टम से बड़ा नंबर सिस्टम है. तो जो लार्ज नंबर सिस्टम होता है उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल में तो हम डिवीजन करते हैं.
और जब छोटी वैल्यू होती है हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, हम उसको ज़्यादा लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है। तो उसी वक्त हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, एक्सपेंशन मेथड उसको कहते हैं। हम वो मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम उस नंबर सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी को, तो जो डेसिमल के जितने भी वैल्यूज़ होते हैं उनको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली हम हर एक नंबर, हर एक डिजिट पर, हर एक जो बेस होगा, डिजिट होगा, उस पर हम पावर्स रखते हैं। फिर हम पावर्स सॉल्व करके फाइनली मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके, एडिशन करके बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो प्यारे बच्चे हमारे पास दो तरीके कार होते हैं, एक एक्सपेंशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, योर लेक्चर हियर एंड्स हियर एंड योर होमवर्क इज टू define the methods of converting number systems. So dear students, you will have to write down the description, the definitions of the number system, of the methods that we use to convert a number system into another number system. So dear students, I have also discussed these methods here in this lecture, and same methods are given to you to write down in simple words, and you will have to send me on our WhatsApp group. Our lecture ends here and we will meet in next lecture. Still Allah Hafiz.